सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और इस ब्रिज सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 2015 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस। इन टुडेज वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग हिस्ट्री एमसीक्यूज व्हिच केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2017। एक्चुअली इफ यू विल वॉच दिस सीरीज, दिस विल गिव यू एन आइडिया दैट यूपीएससी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज। वी हैव कंप्लीटेड a geography bridge series. Now we are discussing history bridge series. Total questions which came in 2017, they were basically 6 questions, 2 from ancient and 4 from modern. So we'll start with reference to the difference between the culture of the Rigvedic Aryans and Indus Valley people. Which of the following statements are correct? Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in the warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus people having been aware of this animal. Select the correct answer using the code given below. Pause the video, try to answer. So basically, now we'll discuss the answer. Statement first says that ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड अबाउट दैट। सो रामायण एंड महाभारत में इनका जिक्र है हेलमेट्स वगैरह का। एंड द रामायण मेंशंस कैरियट्स कवर्ड विद लेदर। द ऋग्वेदिक कैरियट्स यूज्ड वर्मा which were the coats of mail and sipra which were the helmets. Statement second says that Indus Valley people knew only about copper and iron, but this is not true. गोल्ड बीड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यू कैन एलिमिनेट द बी एंड डी। स्टेटमेंट थर्ड इज बेसिकली अ डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट। द ऋग्वेदा मेंशंस द हॉर्स ड्रॉन कैरियट्स विद स्पोक व्हील्स, बट देयर इज वेरी लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हॉर्सेस ड्यूरिंग द हरप्पन एरा एंड नन एट ऑल अर्लियर। द एग्जिस्टेंस ऑफ द हरप्पन हॉर्स इज अ हॉटली डिस्प्यूटेड टॉपिक अमंग आर्कियोलॉजिस्ट। एंड हॉर्सेस को लेके एक बाद में सीरीज भी आई थी मनोज बाजपेयी की, दैट वाज ऑन सिनोली, जिसमें हॉर्सेस दिखाए गए थे और उसका लिंक इंडस वैली से दिखाया गया था। तो इट इज डिस्प्यूटेड, बट द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर। So basically your correct answer is C, which is both Munro and Reed. The Rayatwari system was basically given by Reed and Munro at the end of the 18th century. It was later introduced by Thomas Munro when he was governor of Madras. Statement 2, he is associated with Cornwallis Code of 1793 and could not have been the answer since his tenure preceded the Rayatwari settlement. सो यहाँ पे मुनरो रीड का ही नाम आता है। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट दिया था। परमानेंट सेटल में फिक्स्ड रेवेन्यू दिया जाता था, उसको कंपनी रिवाइज नहीं कर सकती थी, तो ये उसके डीमेरिट्स थे। इसीलिए सदर्न रीजन में मुनरो एंड रीड ने रैयतवाड़ी सिस्टम दिया था, जिसको रिवाइज भी कर सकती थी उनकी सरकार। सो योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। गजुलू लक्ष्मीनारासू Chetty, founder of the Madras Mahajan Sabha, and Surendra Nath Banerjee, founder of Indian Association. Which of the above pairs given is correctly matched? Pause the video, try to answer. Now we'll see the answer. So basically your correct answer to this is B, 1 and 3 both. The first committee of association was composed of Raja Radhakant Dev, President, Raja Kali Krishna Dev, Vice President, and Devendranath Tagore, who was Secretary. This was the first committee of association. Statement second says that in 1884, basically M. Virara Ghavacharya, G. Subramaniam Iyer, and P. Ananda Charlu established the Madras Mahajan Sabha. It was not this Gazulu Lakshmina Saruchiti. So by elimination you get this. And third, IA was the first award nationalist organization founded in British India by the Subendranath Banerjee and Anand Mohan Bose in 1876. Therefore, your answer is B. Question number 4. The object of Butler Committee of 1927 was to
define the jurisdiction of central provisional governments, define the powers of the Secretary of State for India, impose censorship on national press, improve the relationship between Government of India and Indian states. Possibility, try to answer. So basically, it was also known as the Indian States Committee. Relations between the Indian princes and the crown were not well defined because of extent of sovereignty of the paramount power was not settled properly. The Indian States Committee, under the chairmanship of Harcourt Butler in 1927, was appointed to investigate and clarify the relationship between the paramount power and the princes or the princely states. So basically your correct answer was D, improving this relationship between states and Government of India. Question number 5. With reference to the Indian freedom struggle, consider the following statements. Mutiny in Royal Indian Navy, Quit India movement launched, second round table conference. What is the correct chronological sequence of the above events? Pause the video, try to answer. So basically इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए. रॉयल नेवी म्यूटिनी अकर्ड ऑन 18 फरवरी 1946. इसमें जो इम्फाल कोहिमा बैटल हुआ था उसमें जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके लोगों को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सजा दे रही थी तो रॉयल म्यूटिनी हुई थी जो अपोज कर रहे थे उस चीज का. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी. भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त 8 1942 में हुआ था. देन second round table conference was held from September 7 1931 to December 1st 1931. This was the only conference जिसको कांग्रेस ने अटेंड किया था. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और थर्ड को नहीं किया था कांग्रेस ने, और ये भी गांधी इनवेर पैक्ट के बाद हुआ था. So if you go with the options, then you have 3, then 2 and then 1. C is your correct answer. Question number 6. Consider the following statements. The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. And M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. Which of the above statements given is are correct? Pause the video, try to answer. Now we'll see the answer. So statement 1 is wrong. The 1881 Act aimed to improve working conditions of the labor. It prohibited the employment of children under the age of 7, limited the number of working hours for children below the age of 12, and required that dangerous machinery should be fenced properly. Statement 2. Lokhande was a pioneer of the labor movement in India. He is remembered not only for ameliorating the working conditions of the textile mills in India in the 19th century, but also for his courageous initiatives on caste and communal issues. So a correct answer is B, which is 2 only. Moreover, 1881 के अराउंड ब्रिटिश सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ट्रेड यूनियंस बने. सो बाय एलिमिनेटिंग दिस यू गेट आंसर दिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो एंड सेशन. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.